Hello students, good afternoon. तो right now I'm discussing 12th physics series और चैप्टर नेम इज द रे ऑप्टिक्स. ऑलरेडी इसका लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जो बेसिक फंडामेंटल्स प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर मिरर को रोटेट करते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो कितना डिग्री से आपका रिफ्लेक्टेड रे घूमता है, वो सब मैंने डिस्कस किया था. और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन. अभी राइट नाउ हमारा टॉपिक जो है ना बेटा, जैसे हम लोग, आप लोग ये मुझे बताओ मुझे कि जो प्लेन मिरर में जो आप इमेज देखते हो कैसे बनता है, बोलो. रिफ्लेक्शन से. उसमें अपन लोग रे ट्रेसिंग डिस्कस किए थे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, लेकिन प्रेजेंटली अभी हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का करते हैं. जैसे ये आप देख रहे हो, ये एचओ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. तो बताओ आप लोग रूल क्या है इमेज फॉर्म करने का, जो तरीका है तो सेम तरीका रहेगा. मतलब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ए है और बी है. बी क्या है, इसका हेड है, ठीक है ना. तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेकर के उसके दो रे ये ट्रेस करेंगे, मतलब वहाँ से एमर्ज करेंगे, और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए हमारे आई में रिसीव होगा. तो उसके बिहाफ पर हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं. तो देखिए ये रे आपका जा रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस है, और फिर रिटर्न बैक हो रहा है. इस केस में I0 और R0, राइट. और एक रेड कलर का लिया है, वो रिफ्लेक्ट होकर के ये एंगल और ये एंगल दोनों आपको मिल करके ऐसा रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रहा है, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है. तो ओवरऑल ये आई को क्या फील हो रहा है कि लाइट जो है आपको यहाँ से आ रहा है, तो इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रहा है. और आपका जो ऑब्जर्वेशंस है, इसमें जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट और इमेज का, दोनों सेम डिस्टेंस पर है. और मैग्निफिकेशन वाइज देखा जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, सेम है. और ये जो है एक्चुअली रियल कट से नहीं बन रहा है, ये वर्चुअली मीट कराने से. जो कलर ग्रीन कलर का मैंने दिखाया है वो वर्चुअली है, बिकॉज ये रेड कलर तो इधर आ गया और ये ब्लू कलर का लाइट उधर चला गया, तो ये अपना वर्चुअल इमेज है, राइट. तो ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, इट वाज द इमेज फॉर्मेशंस थ्रू द प्लेन मिरर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इजंट इट. So overall we are getting that this there is nothing, all things are the based on the law of the reflection. See this angle and this angle the same here, and for this angle the angle I is equal to what here, 0, and the angle R is equal to what here, 0, and this reflected rays goes like that, this red color reflected light goes like that, and the virtual image is the form there. Which type the image the formed? Virtual image. Got it? And a very interesting situation is there. Sometimes suppose that this is the red color, there is a plane mirror here, and the black spot is there, the object here, and this is the means a line on which observer is moving. This is the line, actually this is the line on which observer is moving. And what you want to see, actually see that the distance between the object and the mirror, this one, this distance and this distance, this is the line, the object between this object and line, and this object between the mirror and the distance between the object and mirror, and the distance between this line and the object is the same, right. तो actually अपन का टारगेट क्या है कि we want to, what we want to do, actually h is the length of the mirror here, and we want to up to what distance on this line we can receive the image, receive the light in the eye of the observer, in the eye of the observer. It's very interesting, very interesting. Yes. So see that suppose this is the object here, light goes like that and reflected at this. This is the extreme reflected light. This is the extreme reflected light. यहाँ से अधिक नहीं जा सकता. And in the same manner this light comes here and extremely reflected at this point. Now this distance from this to this is the range here. So see that this the, what is the h here? H is the length of the mirror, and by geometry we see that this is the h by 2, this is the h by 2, and this will be h. This is the actually mid point parallel theorem. Suppose ये आप देखें, this is the h by 2, and यहाँ से जो लाइट है, यहाँ से जो लाइन जो होता है अगर पैरेलल होता है तो उसका बेस का ये हाफ होता है, मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ज्योमेट्री वी आर फीलिंग दैट कि इफ दिस इज द h by 2 या दिस इज बाय h by 2, तो दिस विल बी h here because this is the mid point. In the same manner this is the
total h, and this is the h by 2, and it is h by 2, and if I join the line, this one, this is the h by 2, and this triangle and this triangle will be congruent, and this is the h by 2, this is the h by 2, but this line will be h. So total h by 2, h by 2, h, this will be what? 2h. So means h by 2, 3h, sorry. So total range is the what here? 3h. Means if the length of the mirror is h, so we can means get the range 3h here, isn't it? Yes. Then we see this is the problem here. So that the minimum size of the plane mirror required to see the full image of the absorber is the half size of the that absorber. Means see, this is the mirror here, this is the mirror, and this is the absorber here. H is the head and E is the eye here, and F is the foot. And actually we want to see the full image of this absorber, isn't it? This is the absorber here, this is the absorber. H is what here? Head. E is what here? Eye, and F is the foot. This observer wants to see his image in his own eye. The real light comes from the head and goes at the extreme point of the mirror and comes like that. It comes into eye. In the same manner, the light goes from the foot and it reflected and goes into the eye. Law of reflections is followed here. This is the law of the reflection. This is the law of this angle and this angle is the same. This angle and this angle is the same here. I suppose this is the x and this is the y. So then the length will be mirror will be x plus y. And in the same manner, this triangle and this triangle is the congruent triangle. The x and x. This is the y and this is the y. So total height will be 2x plus y. This is the here 2x plus y and this is the x plus y. So at least half height of the observer should be needed for the full image of the observer here, isn't it? So this the question was, it was the proving actually. So now I think you are understanding the all concepts, and overall there is the nothing, there is the law of the reflection, I is equal to R. Actually total ray optics is the based on the angle relationship. If you go through the refraction, you will get the relationship, the certain angle in the prism, certain angle in the refraction through the curved surface, refraction through the lens, or everywhere a certain angles. Some Snell's law, they're based on the angle based. Okay, thank you.